Hello. So let's begin with the topic profit and loss. Profit and loss terms are basically when we are talking in terms of terms like profit loss, we are basically talking about some sort of business. Starting the topic with business. What is business? Generally, the answer that we get is business is basically a economic activity, a transaction. So basically talking in terms of business, business होता क्या है पहले वो समझते हैं. What happens is कि whenever you are purchasing a goods and then selling the goods, जो आपने एक goods को purchase किया, किसी article को purchase किया, उसको sell कर दिया, इस पूरे प्रोसेस को बिजनेस बोला जाता है. अगर बिजनेस की बात कर रहे हैं, then we need to understand certain terms. But before that, earlier in the economy, when we were having the exchange of goods and services with goods and services, that system is known as barter system. All of you are aware of. So till the time we were having barter system in the economy, was there any concept of profit loss? Generally, the answer varies, but yes, there wasn't any concept of profit loss till then. Reason being justified because you were not aware of the value of some product, some article. ये जो वैल्यू डिफाइन हुआ ना, ये कब डिफाइन हुआ? जब करेंसी सिस्टम में आ गया. जैसे ही करेंसी आया तो आपने क्या किया? आपने सारी चीजों को, सारे आर्टिकल्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म यानी करेंसी के टर्म्स में डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया. जैसे ही करेंसी के टर्म्स में स्टार्ट करना डिफाइन किया, व्हाट हैपेंस इज कि अब आप आर्टिकल परचेज कर रहे हैं, आप उसको सेल कर रहे हैं, तो डिफरेंसेस आने लग जाते हैं बिटवीन द टू प्राइसेस. स्टार्टिंग विद द टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस. द फर्स्ट टर्म इट्स कॉस्ट प्राइस. व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? The price at which we are purchasing the goods. But it can be the price at which we are manufacturing the goods, we are developing the goods, we are purchasing the goods, we are purchasing the goods and paying something extra like delivery charges, like excise duty, like taxes, anything like that. Every single penny is spent on your part. आपने जितना भी पैसा खर्च किया है in any of the XYZ things, everything is a part of cost price. Second comes selling price, SP. सिंपल सा टर्म है, द प्राइस एट विच वी आर सेलिंग द गुड्स. जितने पे आपने आर्टिकल को बेच दिया है, दैट प्राइस इज नोन एज सेलिंग प्राइस. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपने एक आर्टिकल को परचेज किया, उस आर्टिकल को वापस से सेल कर दिया. इज इट नेसेसरी दैट द टू प्राइसेस आर गोइंग टू बी द सेम? दोनों प्राइसेस सेम होंगे ऐसा जरूरी है? ऑब्वियसली नॉट. सो जब प्राइसेस में डिफरेंस आते हैं तो दो केसेस अराइज होते हैं. द फर्स्ट केस इज आपने आर्टिकल को लेसर प्राइस पे परचेज करके मोर प्राइस पे सेल कर दिया, तो आपका जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज प्रॉफिट. और अगर आपने ज्यादा में खरीद के कम में आर्टिकल को बेच दिया तो आपका जो डिफरेंस आता है दैट इज टर्म्ड एज लॉस. So let me just give you an example for that. We'll be deriving all the formulas by ourselves. As I told you in the previous topic percentage, कि सारे formulas अपन खुद ही derive करेंगे. So starting with the same. देखिए, a basic example, like suppose you're purchasing an article for be 140 and you're selling the same article for rupee 160. Had a profit or a loss? आपने 140 में परचेज किया, 160 में सेल किया. There is a profit of 20 rupees. All of you must have calculated it. Profit of 20 का मतलब क्या होता है कि आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. ये कैसे हुआ वो समझने की कोशिश करते हैं. आपने क्या किया? 160 माइनस 140 कर दिया. सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आ गया? 160 वाज एसपी एंड 140 वाज सीपी. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आ गया एसपी माइनस सीपी. अगर यही 140 वाला आर्टिकल जो आपने 140 में परचेज किया था, इसको आप 130 में सेल करते तो क्या होता? लॉस. कितना? 10 रुपीज. हाउ यू आर कैलकुलेटिंग दिस 10 रुपीज? इट इज 140 माइनस 130. तो दिस टाइम लॉस इज सीपी माइनस एसपी. बराबर. नाउ गोइंग अहेड, अ बेसिक थिंग. आपने जब 140 में परचेज किया, 160 में सेल किया, आपने बताया 20 रुपीज का प्रॉफिट. ये जो 20 रुपीज का प्रॉफिट आपको हो रहा है, ये 140 पे हो रहा है या 160 पे हो रहा है? 140 पे. That means you are gaining 20 on 140. So to calculate percentage, you'll be like 20 on 140 into 100. That is profit percent. Profit percent का formula देखते हैं. आप बोल रहे 20, that is profit upon 120, 140, that is cost price into 100. So profit percent का formula आ गया profit upon CP into 100. Similarly, जब आपने आर्टिकल 140 वाला 130 में सेल किया, you had a loss of 10 rupees.
सो ये जो 10 रुपीज का लॉस है ये 140 पे है या 130 पे है? अगेन ये 140 पे ही है। आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपके इन्वेस्टमेंट पे होता है। सो इन्वेस्टमेंट वाज 140। ठीक है, सो दिस टाइम यू आर कैलकुलेटिंग लॉस परसेंटेज 10 अपॉन 140 इंटू 100। दैट्स गोइंग टू बी लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। आपने एक आर्टिकल परचेज किया, अपना प्रॉफिट परसेंट उसमें ऐड किया और आर्टिकल को सेल कर दिया। ये वही चीज है जो अपन ने परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में पढ़ी थी। यू आर इनिशिएटिंग द ट्रांजेक्शन विद सीपी। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट डाउन सीपी, देन फॉर द एरो इन बिटवीन यू विल मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 100 प्लस p अपॉन 100 equal to you have reached selling price SP. Any doubts? I guess it's clear. Going ahead, same transaction CP, but this time loss हो रहा है तो loss percent subtract किया and you got your SP. The formula is going to be CP into 100 minus loss percent upon 100 into SP equal to SP. We need to understand, मैंने परसेंटेज में बोला था कि इन केस अगर आप परसेंटेज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेंगे, प्रॉफिट लॉस वाले सारे फॉर्मूलाज आप खुद डिराइव करेंगे। तो जस्ट नीड टू ऑब्जर्व कि अपन ये सारे फॉर्मूलाज खुद डिराइव कर रहे हैं। वी आर नॉट मगिंग अप एनी ऑफ द फॉर्मूला, अपन इनमें से कुछ भी मगअप नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट गेटिंग इट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज में एक नोट पॉइंट भी मैंने लिखवाया था कि इन केस ऑफ परसेंटेज इफ द बेस वैल्यू इट्स नॉट गिवन टू यू। यहां पे बेस वैल्यू क्या है? आप प्रॉफिट लॉस किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? कॉस्ट प्राइस पे। So in case of profit loss, always assume the cost price if not given to be same concept 100 or 100x depending upon if there is a constant or there is no constant in the question. I hope that's clear to all. ये सारा सबको clear हो गया होगा. Going ahead, we'll be discussing the different types of questions that we generally face when I'm talking in terms of profit loss. तो profit loss के terms में जो अपन different types of questions जो अपन observe करते हैं generally, वो सारे questions अभी अपन discuss करेंगे one by one. And there is some or the other concept related to it, so we'll look into it. Type 1. जैसे ही क्वेश्चन आता है, what you need to do is you have to pause the video for 2 minutes. You have to solve the question. You have to get your answer. Then continue with the video. You'll get the answer in the video itself and check if it is correct or wrong. In either cases, you are getting a correct or a wrong answer. We'll be discussing the approach as well. So basics का concept. सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, solve the question and get back to the video. Question, it's on the screen. Try to get me the answer. Pause the video for 2 minutes. Okay. So I hope you must have solved it by now. And let's check out the answer. The correct answer for this question is going to be 15% profit. Okay. So it's a 15% profit that we are having in this case. अब ये आ कैसे रहा है पहले वो देखते हैं। मैंने बोला whenever it's a question based on profit loss always start with CP। दे रखा है तो assume नहीं करना है, नहीं तो assume करना है, लेकिन start CP से ही करना है। So there were two CPs, 6700 and 4300. I added them together to make it a 11,000। SP की बात करते हैं, टोटल SP दे रखा है, इंडिविजुअल नहीं दे रखा है 1260, 12650। प्रॉफिट हो रहा है आपको 1650 का on a CP of 11,000 into 100, which turns out to be 15%. So 15% is the correct answer for this question. A very basic question to start with, but yes, this is one of the types of questions that we can face when I'm talking in terms of examination. The concept related to the question is irrespective of आपको इंडिविजुअल सीपी दे रखा है, इंडिविजुअल एसपी दे रखा है, नहीं दे रखा, आपको जब भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, यू ऑलवेज नीड टू कैलकुलेट इट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। इंडिविजुअली एक आर्टिकल पे दूसरे आर्टिकल पे नहीं कैलकुलेट करना होता है कभी भी, until or unless you are being asked upon something like that in the question itself. You just need to calculate it in on the whole transaction. So irrespective of individual CP or SP given in the question, we always need to calculate profit loss on total CP or SP. Clear? Can take a screenshot, then we'll go ahead with the same. Done. Going ahead, let's go ahead with the next type of question. So here it's type 2 of question.
The question is on the screen. Again, pause the video for 2 minutes, solve it, get back to the video, and we'll continue. Okay, so I hope you must have solved the question by now. So let's get back to the question. The correct answer for this question is going to be a loss of 11%. अब देखते हैं कैसे आता है. Some of the students might have a doubt कि 4600 में खरीदा, 4628 में बेचा, तो लॉस कैसे हो गया? अपन कम में खरीद रहे हैं, ज्यादा में बेच रहे हैं, तो लॉस क्यों हो रहा है? सो वी नीड टू टेक दिस इनटू कंसीडरेशन. मैंने बोला था जितना भी आपका खर्चा होगा, वॉट एवर द pennies or whatever the money that you are spending, everything is to be counted in CP. So CP in this case is going to be 4600 plus 600, which is 5200. And talking in terms of SP, that's going to be 4628. So you can observe there is a loss of, I guess, 572 on 5200 into 100, and it turns out to be 11% loss. I hope that's clear. ये बहुत बेसिक सी क्वेश्चंस है, होपफुली आपको क्लियर होंगे. ठीक है, going ahead with it, it's a 11% loss in this case. The concept related to the question is all the additional expenses that you'll have, anything like that. It can be a transportation cost, it can be a delivery charges, can be a repairing charges, can be anything like that, can be taxes, excise duties, anything. जितना भी खर्चा हुआ है, every single penny is to be added to the cost price, and then you'll calculate your profit or loss percent. Right? The concept is all the additional charges, transportation, repairing, renovation, taxes, etc. are to be added to the cost price, and then the final CP is obtained on which profit and loss is to be calculated. Right? So I hope that's clear to all. You can take a screenshot for this and we'll go ahead with it. Okay. Going ahead. Type 3. Again, the same procedure. Check the question, pause the video, take 2-3 minutes for solving the question, get back to the video and check the answer. Okay, I hope you must have solved the question by now. The correct answer for the question is rupees 880. 880 is the correct answer. Might have got the answer, might not have got the answer, but this question is particularly more about approach. Because generally what I have observed is कि students keep on trying to apply the formula. देखो यार, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि अगर आप फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा फोकस करोगे ना, तो you'll get confused because at the time of examination आप वो फॉर्मूला रट के जाओगे तो दिक्कत होगी. तो फॉर्मूले पे नहीं जाते हैं, डायरेक्टली कुछ कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश करते हैं जिससे आंसर इजीली आ जाए. तो मैंने क्या बोला कि whenever it's a question based on profit loss, always start with CP. Is the CP given to you in the question? No. So what I'll do is I'll assume it to be 100x considering a constant value in the question. मैंने 100x CP ली. फर्स्ट केस में there is a loss of 9%. अब बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसमें मेरे को फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे दिमाग लगाना है. यार देखो, अगर सीपी पे प्रॉफिट होता है तो वैल्यू इंक्रीज होता है, और सीपी पे लॉस होता है तो वैल्यू रिड्यूस हो जाता है. लॉस हो रहा है 9% का, तो 9% से वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, मतलब एसपी हो गया 91x. In the second case, there is going to be a profit of 10%. What the SP should be? 110x. तो 91x से इसका वैल्यू आपको दे रखा है 728. जब आपने 9% लॉस पे बेचा था तो आपका सेलिंग प्राइस था 728. सिंपल से कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, 728 अपॉन 91, which turns out to be 8. और ये x का वैल्यू इधर पुट कर दीजिए, 110 into 8, 880 is the correct answer. So you can just observe there wasn't any formula required in this concept. In this case, मैंने सब कुछ concept के basis पे कर दिया.
This is something which you are not going to forget in the future. ये आप भूलेंगे भी नहीं. Secondly, dependency formula पे भी नहीं रही. ये बहुत जनरल सा कॉन्सेप्ट है जो अपन समझ सकते हैं. ठीक है. Going ahead with the concept related to the question, it is in if the CP is not given the question, assume it, but always begin the solution with the value of CP only if the question is based on profit or loss. So I hope this question is clear to all. You must have taken a screenshot for the same. We'll go ahead with the next one. Type 4. So basically, again, check the question, pause the video, solve the question, get back after 2-3 minutes, and we'll continue with the solution. Okay, so I hope you must have solved the question by now. Let's continue. The correct answer for this question is rupees 950. I hope you must have got the answer, but still let's check out the solution for this. Again, मैंने बोला कि profit loss को CP से start करना है, and that's not given to you. Assume it to be 100x. In the first case, you were having a loss of 5%. पहले ही क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि मैंने एक आर्टिकल को 5% लॉस पे सेल किया. इसकी जगह अगर मैं उसको 3% प्रॉफिट पे सेल करता तो मुझे 76 रुपीज का एसपी ज्यादा मिलता. जब लॉस पे सेल किया तो मेरा एसपी कितना हो गया? 95x. इसी चीज को जब मैं 3% प्रॉफिट पे सेल करूंगा तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा? 103x. एंड एज पर द इंफॉर्मेशन 95x यानी जो पुराना एसपी है उसमें अगर 76 ऐड कर दूंगा, I'll get the new SP. So I'll have 8x equal to 76. I'll have x equal to 9.5. Putting the value of x over here, my CP becomes 9.5 into 100. That is 950. So the correct answer for this question is rupees 950. Coming to the concept, it is the same concept that we discussed in the previous question. If the CP is not given in the question, assume it. But always begin the solution with the value of CP only if the question is based on profit loss. I hope that's clear to you all. You can take a screenshot and then we'll go ahead with it. Okay. So let me remove the data and going ahead with the next one. We'll have next type of question, type 5. Question on the screen. Check it, solve it, pause the video and get back after 2 minutes. So I hope you must have solved the question by now. The correct answer for this question is rupees 6,000. Now how we are getting the answer for this, we'll just check it out. देखो यार, A ने B को सेल किया, B ने C को सेल किया, C ने D को सेल किया, ये क्वेश्चन दे रखा है. Don't you feel like it is a resemblance of successive increment decrement? मैं इसको बना के दिखाता हूँ. A के पास आर्टिकल था, उसने प्रॉफिट 10% का लिया यानी 10% प्राइस को इंक्रीज किया. B को दिया, B के पास 20% इंक्रीमेंट हुआ. C को दिया, C के पास 30% इंक्रीमेंट हुआ और उसने D को दे दिया. और D ने फाइनली इसके लिए 10296 पे किया. बहुत सिंपल है. सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में अपन ने पढ़ा हुआ है. स्टार्टिंग विद A 10% का इंक्रीमेंट है इंटू 110 अपॉन 100. 20% का इंक्रीमेंट है इंटू 120 अपॉन 100. 30% का इंक्रीमेंट है इंटू 130 अपॉन 100 इक्वल टू D 10296. I'll simply solve the question. I'll get the answer. Answer will be 6,000. अगर यही बोला होता कि B का बताइए, मैं ये वैल्यू हटा के B रख देता, I would have got the answer accordingly. So this is a question which is based on the basic concept of successive increment decrement. अगर अपने को सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है तो ये क्वेश्चन अपन बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे. So I hope that is clear. This question is clear. The concept related to the question is this type of question can be easily solved by using the concept of successive percentage increment decrement. Fine. So
With this, we are done with the first video of profit loss. We'll have another video for profit loss where we will be discussing the other types of questions which are left upon in the chapter. As of now, in this video, we have discussed 5 types along with all the formulas related to profit loss. I hope that's clear. As a part of homework, you can solve questions as per the sheets provided to you. Okay, go through the sheets and solve the questions, and accordingly, we'll continue with it in the next video.